Namaste, Jai Hind. मैं डॉक्टर वैभव भानावत. So I'm a proud alumni of a 1986 batch of a GMC Nagpur. So though I passed at what year I don't remember, but important is that now I'm back to Nagpur almost after 27-30 years. Last 8 to 10 years we realize कि our family is so big like an ocean, but we are all scattered here and there, and we are busy in our own profession, our own personal life. But that's also equally important. But I have worked in nearly 8 to 10 countries, and I was asked which country you are from. So I used to say India. And then you're a doctor, which medical college? GMC Nagpur. So my identity was my country and my college. After that my family, but country, college, profession. Like भूटानी सर से मेरी दो माँ, एक मेरी जन्म देने वाली माँ और मुझे पढ़ाने वाली मेरी अलमा, हम सब इसी भाव में हैं. और पिछले 15 अगस्त से हमने शुरुआत की है कि आज के दिन जो हमारा गौरवशाली दिन है, भारत देश का प्रजासत्ताक दिन है या स्वतंत्रता दिवस, देश की बातें हम लोग अदरवाइज व्हाट्सएप पे इधर करते हैं, पर क्या हमारे पास में आधा एक घंटे का टाइम है कि अपने कॉलेज में जहां हमने शिक्षा हासिल की है वहां जाने का समय है. तो आइए, आज इतने लोग आए, अभी भी लोग आ रहे हैं, पिछले बार भी आए. तो ये एक छोटी शुरुआत है, इट्स अ सीडिंग ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ अ पैट्रियोटिज्म. और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये बढ़ता जाए, ये सिलसिला बढ़ता जाए. इतने कम नहीं, मैक्सिमम लोग आए, इससे वो नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही है. नई पहचान होगी, नए लोगों से दिल जुड़ेंगे और अपने अल्मा मैटर से जुड़ेंगे. थैंक यू वेरी मच एवरीबडी. यू ऑल केम नॉट ऑन बिकॉज ऑफ मी, यू केम ओनली फॉर जीएमसी नागपुर. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू. मैं डॉक्टर विजयश्री महोबिया. बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, एचओडी ऑफ आवर डिपार्टमेंट. मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, बीइंग अ फीमेल, मेरी एक छोटी सी कोटेशन है जो आपके लिए रखनी है या बतानी है. आधी शिक्षा आधी मजदूरी मिली, आधी शिक्षा आधी मजदूरी मिली, सब हुए आज़ाद पर इन्हें ना आज़ादी मिली. देश में अगर बेटियां मासूम है, लाचार है, दिल पे हाथ रख के कहिए क्या भारत देश आज़ाद है. मेरा कहना ऐसा है कि हम जो भी कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़े से फीमेल्स को और आगे लेके आए ऐसी उम्मीद के साथ, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ इतने सारे बैच के लोग आए, बट बीइंग अ फीमेल यहाँ पे 2 कैंडिडेट ही अवेलेबल है. तो बहुत सही बात कही है आपने, और आपका ये मैसेज ग्लोबली स्प्रेड होगा. थैंक यू सो मच. या जय हिंद. थँक्यू व्हेरी मच. आजच्या दिवसाचं जे काही आयोजन झालेलं आहे, एवढ्या कमी वेळेत एवढे लोक आले, आणखी बरेच लोक येणार आहे, येतील. बोला, कुराडे सर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट इंडिज. नाही, भारत देशाने अत्यंत प्रगती केली. पूर्वी भारताचं नाव पाकिस्तान सोबत जोडल्या जायचं. आज भारताचं नाव अत्यंत सन्मानाने त्यामुळे सध्याच्या सरकारला मी मानाचा करतो. जीएमसी नागपूरला नेहमी असं लोक शिव्या द्यायच्या. आज जीएमसी नागपूरने सुद्धा जशी भारतानं प्रगती, नागपूरने सुद्धा एक, फक्त आपण पेपरवर कमी आहोत. पेपर आपल्यापेक्षा खूप मेडिकल कॉलेज पेपरवर खूप चांगले आहे. आज गेल्यावर नंबर 1 आहे, पण पेपरवर आपण कमी असल्यामुळे या कॉलेजला पेपरवर सुद्धा भारतात नंबर 1 कसा आणता येईल यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला. आपण भारतात नंबर 1 आल्याशिवाय राहू नये. आज डॉक्टर महेंद्र खोबरागड़े, डीन, श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज भोपाल, now working. I was dean in the Grand Medical College, JJ Hospital, Mumbai. I all over in the state work. But like this building, there is nothing. Another buildings in our India. This is a proud of for me, proud of all doctors, proud of our all batches. Thank you very much. मी डॉक्टर मनोज मोरे, 88 बॅच, जीएमसी नागपूर. आज सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा माझ्याकडनं. आज मी अतिशय आनंदाचा क्षण आहे की आज आम्हाला आमचे गुरुजन आणि आमचे सिनियर्स आणि आमचे कलिग्स आज आम्ही इथे एकत्रित झालो आहे, फक्त जीएमसीच्या नावाने, ऍज अ प्रॉडक्ट ऑफ जीएमसी, ऍज अ अल्युमिनाय ऑफ जीएमसी. आणि याचा आम्हाला प्राऊड आहे, गौरव आहे आम्हाला. त्याबद्दल मी सर्वांना अभिनंदन करतो आज. आणि आज हा जो सोहळा आपण आणला तो अतिशय चांगला उपक्रम आहे आणि हा दरवर्षी आपण टिकू. थँक्यू. Everyone, happy Republic Day to all of you. I am Dr. Gurmukh Bhutani. I am a product of this college, Government Medical College, Nagpur. I belong to 79 batch. कहने को लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं कहूँगा मेरी 2 माँ हैं, एक जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी जो आप पीछे देख रहे हैं, माय अल्मा माटर मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने मुझे
इस रूप में आपके सामने पेश किया दाल रोटी दिया ना थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू आई एम रियली डिलाइटेड टू सी माय टीचर also here my seniors are also here to congratulations and Cooperate. thank you very much to be a part of this celebration and small gatherings. Thank you. Me, Dr. Rashmi, 91 batch GMC, and wish you all a very happy Republic Day. It's always a nostalgic feeling while visiting GMC anytime. Thanks to Banat Bhau, who Arrange. makes it possible for all of us. Otherwise, it would have been impossible to, get Think together of of so so many. many batches at the same time. So, once again, wish you all a happy Thank you. Myself, Dr. Sushant Mishram, Professor Head Pulmonary Medicine, GMCS Nagpur, 87 batch, and I wish all of you very, very happy Republic Day. The beauty of our Republic Day is that on this day we adopted the Constitution of India, and the Constitution of India is one of the best in the world, which gives an equal opportunity to all of us in terms of social equality, then justice, economy, and most important part of our constitution is that it spreads the feeling of fraternity, and same feeling we are having among us here as the alumni also. I wish you very, very happy Republic Day. Thank you. मनोगत व्यक्त करा आजच्या दिवसात. I am very happy to come here. Trivedi, Rotary Club आपला spread. GMC Club. So, madam, GMC Club of Fun. उनके लिए Thank you very much. I'm Dr. Nikhil Lohia. I'm from 2006 by GMC. It's one thing जब हम लोग साथ में मिलते हैं और एक अलग बात है जब हम कैंपस में साथ में इट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग और आई विश एवरीवन अ हैप्पी रिपब्लिक डे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी मस्ट बी मोर इंडियन देन व्हाट वी आर ये हमको तब समझता है जब हम व्हेन वी लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया देन वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर कंट्री परहैप्स वी शुड स्टार्ट इनकलकेटिंग दैट नाउ एंड आई विश एवरीवन हैप्पी रिपब्लिक डे एंड प्राउड टू बी ए जीएमसी थैंक यू अंजली भांडारकर खूप नशीबवान आहे मी की भारताची एक नागरिक आहे आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची अल्युमनस आहे एमबीबीएस ला प्रवेश केल्यापासून एमडी होऊन बाहेर पडेपर्यंत खूप छान काळ गेला आणि खूप शुभेच्छा देते मी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजच्या सगळ्या स्टाफला आणि त्यांनी जे काही श्रम घेतले आहेत त्यांचं चीज होईल आणि त्यांना फळ मिळेल अशी मी त्यांना शुभेच्छा देते धन्यवाद Good morning, everybody. I wish you all the good wishes for the Republic Day. I'm Vijay Gawande. I'm from 1960 batch. I think here only I'm the only one from 60 batch. But I'm proud to say that I passed from this college in 1965. And I have seen some of my batchmates. They have come up with high and fly colors. Couple of them I know, Dr. Satish Kare. I think he was in UK also for some time, orthopedic surgeon. And Sudhir Babodkar, probably you must be knowing everybody. We are from same batch. I passed from here in 1965. I'm 60 batch. That time only one medical college was there in the whole Vidarbha. And I wanted to go for orthopedics, so I had no choice but to go to Bombay. So I did my post-graduation in Bombay from Nair Hospital. I retired from there in 2000. Then I shifted to Dubai. So I was working in Dubai till 2 years back. I left the job and then I came back here. And I would like to say about my parents. Both have been very actively involved in freedom of India, especially in 1942. Especially my father was ordered shoot at sight. Quit India movement. Quit India movement 1942. And he had burned 2 British soldiers in the police station and killed them. Oh my God. He was an advocate. Huh. And my mother helped him or sort of supported him throughout his career. He died at the age of 86. My mother died at the age of 100. Century. Both of them have been actively in 1942 Quit India movement. Deshbhakt. Yes. So now I'm retired. I enjoy my music and painting. Music painting is my hobby, so I'm pursuing that now.
Thank you very much, sir. I am known as a hand surgeon. I've been doing hand surgery for last more than 30 years now. And treated more than 26,000 hand cases so क्या far. बात क्या बात है. So I'm making a small polyclinic here in Lakshmi Nagar. My son, he's a dentist, so he will look after that medical center. Thank you very Thank much, you sir. for all. Thank you, Dr. Bhanawat, for Thank you, inviting sir. me for this Thank you. Thank you. beautiful gathering. डॉक्टर भाले. मी सर्वांना आज 76वा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो. आणि इथे आता आपण जे जमलो आहोत भानावत भाऊचा म्हणजे एफर्ट्स मुळे बोलने की जरूरत आणि इथे सगळ्या डॉक्टरांना म्हणजे आपण भेट झाली त्याच्याबद्दल मी आभार आहो. आणि अगेन मी सगळ्यांना आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा. 1973 बॅच. सर्वप्रथम प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा. मी जीएमसी मधूनच MBBS MD केलेलं आहे आणि ज्या कॉलेजने आम्हाला घडवलं त्या कॉलेजमध्ये यायला नेहमीच एक विशेष आनंद वाटतो. त्यामुळे प्लॅटिनम ज्युबिली असो किंवा आजचं गेट टुगेदर असो, मी सर्वप्रथम वैभवचे फार आभार मानतो. त्यांनी छान उपक्रम सुरू केलाय आणि आपण तो दरवर्षी सुरू ठेवूया. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा. नमस्कार. मैं डॉक्टर विजय महोबिया, एसोसिएट प्रोफेसर इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट. मैं इस कॉलेज में यदि इधर पे टीचिंग पोस्ट पे हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में मैं आया हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है. इधर पे सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं. मैं बेसिकली जबलपुर से हूँ और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो जबलपुर से हुआ और प्रोजेशन भोपाल से हुआ और फिर मैं इधर पे 2007 से हूँ. टीचर है यहाँ के, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. गुरुकुल के गुरु हैं आप. तो मैं सबको फिर से रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे ऐसा ही प्यार मिलता रहे और आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे. बस बहुत थैंक यू वेरी मच. से समथिंग. मी बोलू सर. तुलाच थँक्यू फॉर गिव्हिंग दिस अपॉर्च्युनिटी. आणि तुम्हा सर्वांना हॅपी रिपब्लिक डे. थँक्यू सर. तुम्ही आम्हाला बोलवा, आम्ही कधी हजर राहणार. जीएमसी 1995 बॅच. मी पूर्ण नाव सोनकुल. जीएमसी 1995. मी रेडिओलॉजिस्ट आहे सर. नागपूरलाच प्रॅक्टिस करतो, सक्करदराला आणि लोकमत स्क्वेअर. थँक्यू व्हेरी मच. यू केम विथ युअर सन. थँक्यू. येस. I am Dr. Murli, orthopedic surgeon, spine surgeon. I own Hope Hospital and Aishman Hospital in Nagpur. I'm a very proud Fauji. My father was a Air Force officer, wing commander. He was a many award winner in Air Force. So I've always felt very proud of the country, of our college. और मुझे स्पेशली ये amphitheater और ये some place to sit and all the stage, it gives me so much pleasure because I have seen GMC over the years, and suddenly there's so much infrastructure coming up, and I feel really very very proud. And of course Vaibhav, यदि मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस जैसे बोलूं तो Vaibhav so much energy, तो मुझे भी वो माल चाहिए जो तू फूकता है.